Question: the wavefront of the light coming from the distant source of unknown shape are nearly which shape? Distant source से light आ रही है, light, so यहाँ ये क्या हो जाएगा? Plane. That's a plane wavefront. So we will get the plane wavefront if light is coming from a distant source. Maybe the the source of the light is the spherical or the cylindrical. But if we are taking it at a distance, some distance, then we will get the plane wavefront. Another question, interesting question. The wavefront of the light wave traveling in vacuum are given by x plus y plus z is equal to c. The angle made by the direction of propagation of light with x-axis is how much? In the question it is given here the equation of the plane wave x plus y plus z is equal to, ये क्या चीज़ का equation है? That is the equation of plane. मैथ्स में पढ़े होगे, plane का equation है. So here the coefficient is 1, 1 and 1 and c is a constant. Now ये x y z is equal to c यहाँ पर जो दिया है, तो ये एक मान लेते हैं प्लेन वेव फ्रंट है यहाँ पर, c इसका डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन वेव फ्रंट इज दिस, एक्स वाई जेड प्लेन है, एंड यहाँ पर बोलता है कि एक्स वाई जेड, तो इसमें और एक्स एक्सिस में क्या रिलेशन होगा, क्या एंगल होगा. तो एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल निकालना सबसे इजी तरीका तो डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे तो एंगल बहुत इजी तरीका से निकल जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एक्स एक्सिस, इसका कोफिशिएंट लेके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आई प्लस जे प्लस के लिख सकते हैं. पहला वेक्टर है. दूसरा वेक्टर क्या बोलता है? केवल एक्स है, एक्स अलोंग द एक्स, दैट इज़ योर आई. तो यहाँ पर हम लोग इसका एंगल अगर ए डॉट बी निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ए डॉट बी बाई ए एंड बी, द मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी. ये क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बाई मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी. यस नो? सो हियर हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी. ए डॉट बी हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ये देखिए आई 1 इंटू 1, यहाँ पर 1 1 था, 1 हो गया, बाई मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी, दैट इज रूट 1 स्क्वायर. एक्स का कोफिशिएंट 1, जे वाई का कोफिशिएंट 1, 1 स्क्वायर प्लस जेड का कोफिशिएंट 1. तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ? 1 बाई रूट 3. सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 3. राइट? ये क्वेश्चन ऐसा था. आई एक्स वाई जेड, एक्स के अलॉन्ग हम निकाल रहे हैं, एक्स ए डॉट बी का यूज़ करके हम लोग थीटा इज इक्वल टू, ये 1 1 1 कैसे हुआ? एक्स प्लस वाई प्लस जे जेड इज इक्वल टू सी था. तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 3. और बी तो सेकेंड वेक्टर जो आई है उसका कोफिशिएंट 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट 3. दिस इज द एंगल. ओके. Another interesting question: can we conclude from the interference phenomenon whether light is a transverse or longitudinal wave? Answer is no. From interference
from diffraction, we cannot say light is a transverse wave. From we can say the light is transverse wave with the phenomena polarization. From the polarization only we can say light is a transverse wave. Actually polarization means the confining of the the electric field or electric vector along a particular dimension or the direction. Here the light is means general unpolarized light is coming. Then what happens? That light is going to pass from this only this particular one dimension only it is going to pass, and the particular component which is like that, the perpendicular to this particular axis, like that, those vector which is vibrating in this way cannot pass. So light is a transverse transverse wave in nature. We can conclude it by with the help of polarization phenomena, neither by diffraction nor by interference, right? Another question, why don't we have interference when the two candles are placed close to each other and the intensity is seen at a distance screen? What happens if the candles are replaced by the laser source? Now the question is that कैंडल से हमको क्यों नहीं मिलता है? कैंडल इज नॉट द कोहेरेंट सोर्स. हमको क्या जरूरत है? कोहेरेंट सोर्स. कोहेरेंट सोर्स अगर होगा then only we will get the interference pattern. Coherent means the waves having the constant phase difference. Constant phase difference. That's important. Constant phase difference. That is a coherent wave. So, in case of candle, it is not possible to get the coherent source. In case of candle, we will not get the coherent, no coherent source is there. Phase difference is different. Not having the constant, but phase difference is varying in nature. So, and if we are going to replace by laser beam, laser source, then also we will not get the coherent source. So, to get the coherent source, we have that one source is going to replace, or we are going to make the two slits in front of it, then we will get the coherent source. One source is going to convert into two sources. That is the best method to get the coherent source. Another question, if the separation between the slits is in YDSC is increased, what effect on the fringe width, and if separation is too much, will fringes remain detectable? We know that beta is equal to lambda capital D by small d. ये क्या है मालूम है सबको? That is your capital D, and small d is the separation between slit. The fringe width is having very important formula, lambda capital D by small d. Here in this particular question, what effect will be there if the separation between the slits is increased? If D increases, then beta decreases, inversely proportional. D increases, beta decreases. So fringe width छोटा हो जाएगा, fringe width कम हो जाएगा, उसका width fringe का कम हो जाएगा. अगर ये सेपरेशन बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा, तो ये लाइन जो है ये इतना कम, ये fringe width इतना छोटा हो जाएगा कि हमको दिखाई नहीं देगा. इट इज़ नॉट डिटेक्टेबल. इट विल बिकम नॉट डिटेक्टेबल. हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंज में में डिफरेंस डिस्टिंग्विश हम लोग नहीं कर पाएंगे. अदर क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइट वेव. Say the equation of light wave
is written as y is equal to a sin kx minus omega t. What is y here? Y क्या है? Here in case of the light wave, you know that the electric field and the magnetic field is there. So electric field and the magnetic field, you know that electric vector and the magnetic vector both are there. अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z एक्सिस को में इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसका स्पीड का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग y एंड z. तो यहाँ पर y क्या होगा? y इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. हियर y विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड. y क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. Not a displacement, but the y is the electric field. In this particular question, if the equation of light wave is represented in this progressive wave, y is the electric field.